So hey guys, welcome back to my channel Troll Sumit. So extremely sorry आज थोड़ा लेट है, लेट नाइट स्ट्रीम और बहुत ही अच्छा गेम खेलने जा रहे हैं विच इज द बैटमैन का ये पहला एपिसोड है द रिल्म ऑफ सैडोज और रिल्म ऑफ सैडोज नाम है इनफैक्ट और बहुत ही सिनेमैटिक और बहुत ही प्यारी गेम है। ऑल्दो मैंने अभी 2 दिन पहले उसको स्ट्रीम करने की कोशिश की, कुछ ग्लिचेस हो गया, ऑडियो ग्लिच तो उसके चलते इशू हो गया, बट आई थिंक दिस गेम इज वर्थ टू स्ट्रीम। और अभी कुछ देर पहले भी मतलब मैंने स्ट्रीम करने की कोशिश की थी गाइस और उसमें भी प्रॉब्लम हो गया क्योंकि 2 बार लाइट कटी और उसके चलते सब कुछ डाइड। ठीक है, तो गेम के अंदर जाने से पहले तुम लोगों से रिक्वेस्ट है गाइस, रिक्वेस्ट तुम्हें पता है क्या रिक्वेस्ट है, ठीक है? तो आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर तुम चैनल पर नए आए हो और वीडियो लाइक कर लो अगर तुम्हें अच्छा लगेगा तो, ठीक है? तो लाइक कर देना ना ज़्यादा सोचे समझे। और क्या रिक्वेस्ट करूँ, हाँ पहले तो जल्दी से लाइक कर लो गाइस, जल्दी से लाइक कर लो वीडियो को, सब्सक्राइब कर लो और कोशिश करें कल सुबह कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल का स्ट्रीम करने का। कुछ नए कैरेक्टर्स आए हैं, खासकर रैम्बो वाला कैरेक्टर आया हुआ है तो मैं वो लेना चाहता हूँ, तो दैट इज समथिंग आई एम इंटरेस्टेड इन, तो उसको लेंगे। जल्दी से बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर लेना और जुट जाना अभी के स्ट्रीम पे क्योंकि ये बहुत ही प्यारा स्ट्रीम होने वाला है, बहुत ही प्यारा स्ट्रीम होने वाला है गाइस, ठीक है? तो गेम को स्टार्ट करेंगे अभी और मैं जा रहा हूँ गेम को स्टार्ट ही करने के लिए, तुम्हें दिखेगा बहुत जल्द। तो अभी गेम को कैप्चर कर लिया जाए, गेम कैप्चर हो जाओ, गेम कैप्चर, गेम कैप्चर कहाँ है भाई? 1 मिनट गाइस, ओके दिस इज इट, दिस इज इट। बहुत ही प्यारी गेम है बट गेम स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें को करना पसंद करूंगा। मैं चेक कर लेता हूँ, कुछ फाइल्स है मैंने थोड़ा सा खेल लिया तो उसको अभी डिलीट करना पड़ेगा क्योंकि मैं चाहता हूँ आप फिर से गेम को देखो। ऑलरेडी मैंने एक एपिसोड खेला हुआ है बट मैं वो सारे फाइल्स डिलीट करने वाला हूँ गाइस। तो जल्दी से भी देखते हैं, कुछ ऑडियो भी चेक कर लेंगे गाइस क्योंकि ऑडियो भी दिक्कत कर रहा है। ठीक है, इतना ही रखा हुआ था, ठीक है? ये तो पहली फाइल्स को डिलीट कर लेंगे क्योंकि इसमें कुछ गेम सेव है। ठीक है, और गेम में जाने से पहले मैं कुछ चीज़ें और फिक्स कर लेता हूँ गाइस सो दैट कि चीज़ें सही चले, सलामत से चले। ओके जस्ट वेट फॉर सेकंड गाइस, हम लोग अपना काम कर ले पहले और बैठ के तब तक तुम वेट करना यार। मतलब ये गेम बहुत ही प्यारा सा होने वाला है लेट नाइट के लिए। अभी मतलब होता है ना चिल स्ट्रीम जिसको कहते हैं गाइस, तो वो चिल स्ट्रीम के लिए बहुत ही अच्छी गेम है ये, तो चिल स्ट्रीम के लिए ही कर रहे हैं रात में अभी। और मौसम भी बहुत अच्छा है गाइस, मतलब जिस तरह का मौसम बाहर है ना एकदम सूटेबल है ये गेम उसी मौसम के लिए, तो इसीलिए इस गेम को खेलना अभी के टाइम पे तो मुझे लगता है वर्थ है। तो 1 मिनट रुक जाओ, बस रुक जाओ, रुक जाओ। बस कुछ चीज़ें पहले सेट करना है इसीलिए मैं अभी रुक रहा हूँ, अदरवाइज गेम में तो जाएंगे ही अभी। ठीक है यार, हम लोग रेसिडेंट एविल भी खेल रहे हैं, ठीक है? उसका स्ट्रीम हमने स्टार्ट नहीं किया है बट मैं इसका हाईलाइट वीडियो बना के डाल रहा हूँ एंड होपफुली तुम्हें वो अच्छा लगेगा।
तो रेसिडेंट एविल का भी वीडियो देख लेना, मतलब सही लगेगा, मतलब ऐसा नहीं है कि तुम बोर हो जाओगे, बहुत ही सही बनाया हुआ है। तो छोटे छोटे होते हैं ना, 15 मिनट आधा घंटा काइंड ऑफ मतलब गेम क्लिप्स बना के डालेंगे, जहाँ पे आप देख सकते हो और मजे ले सकते हो। तो गाइस गेम की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं गेम में क्या हो रहा है। आई होप सब कुछ अभी ठीक होगा। लाइव स्क्रीन पे चल के गेम की तरफ बढ़ के, ठीक है चलो गाइस, ये गेम पूरी अब नए स्टार्ट होने वाली है, पूरी नई स्टार्ट होगी। मैं जस्ट प्रे करूंगा, तुम भी प्रे करो कि अब कोई लाइट वाइट ना कटे, ठीक है। उसके चलते भाई लाइट फ्लक्चुएशन होता है, क्योंकि इस घर की हर चीज़ चल रही होती है इन्वर्टर पे, और इन्वर्टर में तो इसका भी अपना एक पावर लोड है। तो अगर इसके सारे इक्विपमेंट्स चल रहे हों, खासकर लैप मतलब ये पीसी टाइप का चीज़, तो बहुत प्रॉब्लम होता है। एनीवेज गेम की तरफ बढ़ते हैं और दिल थम के बैठो, एंजॉय करो गेम को एकदम। मोबाइल ऐसे ले लो और अपने आँख के सामने रखो गाइस, आँख के सामने रखो और एकदम मज़े से देखो, क्योंकि ये गेम बहुत ही प्यारी गेम है, बहुत अच्छी स्टोरी लाइन है, और हो सकता है कि ये 2 घंटा लग जाए हमें खेलते खेलते। पर्पल लेंगे क्योंकि हमने डिसाइड किया था कि गाइस पर्पल लेंगे, तो पर्पल ही लेंगे, कोई दूसरा कलर नहीं लेंगे, ठीक। जो गाइस अभी नए नए चैनल पे सब्सक्राइब किए हैं उनको खासकर रिक्वेस्ट है भाई, बेल नोटिफिकेशन आइकन को जरूर प्रेस कर लिया करो, ठीक है। यहाँ पे 2 तरह की ऑडियंस होगी, आई कैन अंडरस्टैंड। एक जो कि स्टोरी टेलिंग गेम्स में ज़्यादा बिलीव करती है, उन्हें अच्छा लगता है रात के खासकर टाइम पे, और एक वैसे लोग जो कि ग्राइंडिंग करना पसंद करते हैं, उनके लिए कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल का वीडियोज है, या कुछ और भी वीडियोज है जैसे बैटल ग्राउंड जो आएगी, अभी आई नहीं है, और साइबर पंक काइंड ऑफ जो एक्शन गेम्स है। What are you? Get ready for the action. तो लेजर लगा हुआ है गाइस एंट्री पॉइंट पे, सो दैट कि कोई अगर एंट्री करता है तो सारी चीजें बंद हो जाती है। ओवर कॉन्फिडेंस। Move in. भाई इन लोगों ने लिफ्ट का वायर तोड़ दिया है गाइस, तो लिफ्ट अभी फ्री फॉल कर रही है। Gordon, they're on the 52nd floor. I'm going in. Hey, wait! Wait for backup! Don't need it. Take the stairs. I heard stories, you know. Sent 3 home in an ambulance. The rest in body bags. No wonder the cops want him dead. Hey, you ever seen him? Yeah, Gotham Zoo. With all the other I'm there guys, I'm there. Time for some action guys. Time for some action. चलो Bruce, can't keep doing this. I have to. No one else will. Every drop of blood, everything you've sacrificed. The city is safe now. It's been over target. People will keep you in the crosshairs until you're shot out of the sky.
something to fear. Shit! The hell did he go? Whatever. ऊपर we did, ऊपर get out. ऊपर देखो, मजाक कर, बट मैं सबको ऊपर टांगूंगा। What was that? Back to back, circle up! What the hell is this? भागो भागो भागो। भाई फायरिंग कर रहा है इसको। फटी, बट गुंडे है गाइस, फटी नहीं है गुंडों की। I know you're trying to create a myth, but be careful you don't turn into a monster. Sometimes you need a monster. समझे अल्फ्रेड? Come on! Come on! Come on! Where? लगा ओह, क्या मारे हैं भाई, क्या मारे हैं। Didn't your mother teach you to knock? वाह लड़की, तुम यहाँ पे चोरी करने आई हो? Heyday. लड़की भाग रही है गाइस, लड़की को पकड़ना पड़ेगा। लड़की बहुत ही तेज है गाइस, कैट वुमन है, कैट वुमन। ओह शिट। Stay where you are! You're under arrest! If you want to be intimidating, you're succeeding. Criminals are becoming afraid of you, so are the police. It's a scare tactic out. Just a performance. Without a scratch. So far. That doesn't belong to you. I was wondering if we'd cross paths. You broke the law. Here I am. इसका कलर और मेरे सूट का कलर दोनों का तो सेम ही है। Don't tell me that's why you do all this. बैटमैन की गर्लफ्रेंड तो नहीं बन जाएगी वो। Squeeze into a suit, tie on a cape. Most people dressed up like that end up in Arkham. No one else will. I'm the only one who gets the job done. Sounds lonely. Gotta admit it though. You give a good chase. One day you might actually catch me. Tonight. Don't you know not to corner a wild animal? It's dangerous.
ये टाइप तो मेरे को ही उड़ा रही है। Bring it, Bat. अरे शीशा तोड़ दिया इसका, मार के मुंह फोड़ दिया भाई। अरे भाई ऑप्शन देना चाहिए भाई, मारने पीटने का ऑप्शन मिलना चाहिए। It's over. I wouldn't be so sure. हो। तुम कहाँ चली बेटा, तुम कहाँ चली? तुम तो यहीं रहोगी। Who now? Jesus, got him! Wait! Do not shoot! अरे Why go to all that trouble for this? Shit! A myth can't be killed. You, however, are flesh and blood. सही बात है। ओह नो नो, Damn it! Said don't shoot! इडियट है भाई, एकदम इडियट है। Wait! क्या सीन है, क्या सीन है। भाई साहब की फटी जरूर होगी। अरे इसके आंख खुल गया, देख लो। Guess I was wrong about you catching me. चलो Not sure if it was for my sake or yours, Who put you up to this? Answer me or I let go. but you won't. You're not that kind of guy. भाई ऊपर लेने के बोल, मैं नीचे छोड़ने का मन कर रहा है, क्योंकि मैं ऊपर लूंगा ये मेरे को मार देगी। सो लटक तो छोड़ दे क्या? ऊपर लेना ही पड़ेगा गाइस, कोई ऑप्शन ही नहीं है इसमें। मुझे पता है ऊपर लेंगे तो मेरे को मारती है। कोई नहीं, Bye, Bat. वो मेरा इक्विपमेंट ले ली गाइस, देखो देखो मेरा इक्विपमेंट ले ली और सेट हो गया। Step out of the shadows and be Bruce Wayne tonight. भाई लाइट फिर से फ्लक्चुएट कर रही, भाई मेरी तो हालत खराब हो रही है। Don't let फिर से tombstones स्ट्रीम ना be रुक your जाए। family legacy. Well then. Time to save the city.
गेम अभी लोड करेगा लोग। तब तक मैं कुछ और चीजें सेट करूं यार, क्योंकि मुझे लग रहा है गड़बड़ ना हो जाए। ठीक है, होपफुली चीज़ें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए भाई, क्योंकि गेम बहुत प्यारी है। और मैं एक बार एक्चुअली अपनी ऑडियो सुनना चाह रहा हूँ, क्या गेम में कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ, कुछ ग्लिच मतलब होता है ना, ग्लिच तो नहीं हो रहा था, ऑडियो ग्लिच काइंड ऑफ। तो एक बार चेक कर लेते हैं guys। ओके, तो कम से कम ऑडियो सही है गाइस, तो ऑडियो सही है तो मतलब गेम स्मूथ चल रहा है, गेम स्मूथ चल रहा है गाइस। ठीक है, और गेम स्मूथ चल रहा है तो ये इससे अच्छी बात क्या ही हो सकती है। अब लाइव स्क्रीन पे चलते हैं, गेम का आनंद लेते हैं। अरे जल्दी आ जाओ यार, जल्दी आ जाओ, क्या कर रहे हो, इतना लेट करोगे तो हो गया। जल्दी आ जाओ यार। Thank you. Thank you, everyone. A humble district attorney like myself is not used to such a ringing endorsement. Even one who caught Gotham's crime अब देख रहे हो मेरे अभी तक यहाँ पे कट हो गया है guys, कट हो गया है। too long. This city has burned with corruption and greed under Mayor. तो ये बंदे का नाम है हार्वी डेंट। I promise you, a vote for Harvey Dent is a vote to finally put your foot down. Together, we can stamp out the fire and save our great city. If only Mr. Wayne, my campaign's largest backer, could have heard that applause, he would. Well, there he is. Fashionable and fashionably late as always. Say hi, Bruce. Welcome to Wayne Manor, everyone. My apologies for the late arrival. Oh, not to worry, Mr. Wayne. We've all made ourselves very comfortable. Thank you again, everyone. तो for your बच्चा ongoing support. बनना चाहता है सिटी का, मतलब गॉथम सिटी का मेयर बनना चाहता है। तो वो चाहता है कि मैं उसको मतलब होता है ना, बैकिंग दूं और उसके लिए कैंपेन में उसका साथ दूं, क्योंकि गॉथम सिटी का मैं हीरो Mr. Wayne, काइंड ऑफ। thank you for opening your house to us. Now, I know this is the biggest mansion in Gotham, but I don't think you got lost on your way here. Where were you? I know you prefer the brooding billionaire angle, so the sooner we make nice with the donors, the sooner everyone will leave you alone. Relax, it was important. Not more than this. I know you despise these things, and truth be told, I do too. What, a chance to show off your teeth and talk about yourself to a room full of money? Say it so. It's called playing the game, Bruce. And tonight, if you hadn't noticed, I'm playing for City Hall. No one came here tonight to see me. They want to see the Bruce Wayne, am I right? And I can see him just fine from here. This shouldn't be painful. It's not a kidney stone. It's only a little FaceTime with potential donors. Your face, specifically, with a mouth that's saying, support Harvey Dent. We're the grease, they're the wheels. And they're rolling in enough cash and votes to help make Gotham a place for families again. A little liquid courage before facing your adoring public. This'll Say help you bullet. too, Bruce. Once I've turned this city around as mayor, you'll be a hero for funding my campaign.
Now all I need is a decent slogan. I'm terrible at those. It always makes me sound like a used car salesman. Which, for the record, I have not been since before law school. All right. How about, put a dent in crime? किसका नाम ही है हार्वी डेंट किस लिए? I'm gonna use that. Bruce, I meant what I said. Together, you and me, we change Gotham. एक्चुअली हार्वी डेंट को पता नहीं कि मैं बैटमैन हूँ गाइस. Play in the streets again. उसे लगता है कि मैं वेन इंटरप्राइज का बहुत बड़ा मालिक हूँ, Rough it is out there. We have to जो कि shake मैं हूँ. things up to make that happen. Well, we can बट ये नहीं start पता with कि your भाई hands. मेरा पर्सनल प्रोजेक्ट भी चल रहा है जहाँ पे मैं बैटमैन हूँ. तो ये किसी को नहीं बताया गया, बस एक बंदे को पता हुआ, मेरी फैमिली वाले बंदे को पता था. फैमिली को भी इनफैक्ट नहीं पता था. सिर्फ अल्फ्रेड को पता है. Mr. Wayne, I'd like to introduce you to Bob and Regina. फौज यहाँ पे है. बॉब एंड रेजिना जेलरविच है. Regina here is the chairwoman of Wayne Enterprises, and और चेयरमैन है यार. Mayor Hill last time. I'll admit it, Mr. Wayne. I don't know Mr. Dent from a pothole on Main Street, but I trust your family. If you believe in Dent, we believe in you. After all, whoever you support is a reflection on you. And we trust someone like you to lead this city to greatness. well, I'm flattered, truly, but this night is about getting Harvey Dent elected so he can fix those potholes. I think I speak for half the room when I say politicians are puppets. Oh, come on now, Bob. I'm not a politician. I'm a crusader. No strings attached. पॉलिटिशियन बनने से Both पहले families सब like लोग ours ऐसा ही should बोलते हैं. flock together, you know, like birds. You're preaching, dear. No, it's true. The Waynes and Zellerbachs are reminders of the golden age of Gotham. This city's luster faded years ago, Mr. Dent. Look at Gotham now. Murder in the streets, corruption in City Hall, that Cape Bat freak dealing out vigilante justice like it's the wild goddamn West. Oh, Bobby, regarding Golden Age, seems you're getting cranky in yours. There's always hope. Forgive me सही for बोला. being blunt, but one man can't save this city. ये भी बात It's a एकदम सही है dangerous गाइस. mentality to think so. That's how you get creeps like this Batman. Well, I have to say I side with your wife on this, Mr. Zellerbach. Even a spark of hope can light the darkness. Oh, an idealist with a bank account. He'll be broke before election day. And I know Bruce would gladly spend every penny he has to fix this city. I don't doubt that for a moment. And don't worry though, I am not doing this alone. With Bruce's help, we're replacing the dangerously unsecure Arkham Asylum with a state-of-the-art mental health facility to help Gotham's most at-risk individuals. भाई गेम Dedicated खेला. to Thomas and Martha Wayne, in the hopes that their fate will never be repeated. After all your parents did for this city. Oh, to be killed in a botched robbery in some alleyway. It was terrible. Truly terrible. सही बात है. Tragedy like that, it's such तो मेरे पेरेंट्स की मौत हो गई थी एक रॉबरी में. crippling. If only that deranged man had gotten the right treatment, maybe. Well, I don't like to think about maybes. And I'm sure you don't either. Well, thank you. I wish my parents could be here speaking with you too. And thank you, Bruce, for investing in the health of this city's future. You have our support, Mr. Dent. Go get him. We're on our way. Not saying I doubted you, but that went better than expected. It is a night of ringing endorsements. सही में भाई इसको इंडोर्स करवाना पड़ रहा है. ये कौन है भाई? Well, hello. Harvey Dent, Gotham's next mayor, and eager to know you. Vicky Vale. Not interested. And reporter for the Gotham Gazette. This is a private fundraiser, Miss Vale. No reporters allowed. Well, you don't बहुत mind if I बढ़िया. stay and ask a few questions, do you, Mr. Wayne? No. Well, you can ask me whatever you want at the press conference tomorrow. Actually, I'm here for Mr. Wayne. Tonight is strictly off the record. We can talk, but nothing gets written down. I'm okay with that. I was just hoping to see what makes Bruce Wayne tick. This is quite the social event, Mr. Wayne. Oh, come on now, it's so formal. Call me Bruce. Well,
Bruce. You've been going around pleasing everyone tonight. But how are you doing? Not doing good. You should enjoy your own party before all the champagne runs out. I'm doing better now that you're here. Flood कर रहे हैं If shirts weren't around, I'd give you the private tour. Mr. Wayne, you've got something on your collar. Yes, that's Is that blood? yes, it's that. It looks like. Oh, this? No, it's nothing. It just, cut myself shaving. What, your butler didn't help you this time? Hey, kidding. Do excuse me, Master Bruce, but another guest has arrived. I'm sure they'll find the bar. You may want to greet this one personally, sir. Carmine Falcone? Is the Dent campaign soliciting votes from Gotham's biggest crime family? Falcone's never been convicted of anything except being a businessman who loves this city. ये तो गलत है. Excuse us, Miss Vale. But I won't be a party of his plan क्योंकि भाई obviously तुम कुछ करना चाहते हो One that controls enough और votes to तुम एक get criminal moves family out. का help लेना चाहते हो तो I This is think the I'm not with necessary you. evil of politics, Bruce. It's in the service of a better Gotham for all of us. Look, at least hear him out before you kick him out. Falcone requested to speak with you directly. Jesus, Harvey, inviting a known criminal to your fundraiser doesn't exactly look good for your squeaky clean image. Let me worry about that. A word of warning, Bruce? Play nice. You know, I've been in the market for a new house. Decent walk-up, sky-high ceilings, plenty of room for my cars. I think I'll take it. Though the decor offends my eyes. Oh, man, all flash, no class. Let's talk privately, shall we? Hey, I like this guy. Ready to do business before we even introduce ourselves. अभी इसको अंदर अभी इसका अंदर लिया जाएगा. Carmine Falcone, thank you for welcoming me into your home. इसको लगता है मैं इससे हाथ मिलाऊंगा. सारे लोग मेरे को देख रहे हैं गाइस तो obviously मैं इससे हाथ नहीं मिलाऊंगा. You're a respectable man, I hear. चेहरे से कमीना दिखता है गाइस. Gentlemen, perhaps we'll all be more comfortable in the parlor. Follow me, if you will. You should know, Mr. Falcone, my analysts say we're raising triple what Mayor Hill has... Hey, what's... Private audience. Come on, guys. Bruce? You'll be fine out there, Harvey. I saw plenty of skirts to keep you busy for a few minutes. Have a drink, have a talk. Harvey stays with us. A man's home is his castle. I respect that. Seen and not heard. Whatever you... What did I say? चलो आने दे दिया बट मैंने जब लास्ट टाइम किया था इसको मैंने आने नहीं दिया था. चलो देख लेते हैं. Mr. District Attorney here wants to make sure the rules are followed. But in my experience, there's the law, and there's doing what's right. You understand? And I'd rather see Harvey actually help this city instead of just saying he will. The man talks too much, chaps my face with words. Well, I would say you can uphold the law and still do what's right. To a point. No one gets remembered for staying in the middle. Mr. Falcone, No more warnings. इसको तो साइड कर दिया है. Action wag about politics, Mr. Wayne. Gives me indigestion. I got enough of that as is. So, let's talk relationship. Chalk this for me. साला तेरा नौकर हूँ क्या? I can get Harvey the mayor's seat. Or I can pull it out from under him. Whatever happened to being a gracious host? Okay, imagine this is me.
And these are all my friends in Gotham. The businesses, restaurants, clubs, docks, unions, politicians. I make them all move. And I want to keep everything moving if Harvey gets elected. That's why I came here tonight to your lovely home, hoping to make a new friend. मतलब ये चाहता राज करना, बेसिकली ये कर रहे हैं. See the light, if need be. Between your businesses and mine, I bet we employ half the city. Now we got a good thing going, so I don't see why we shouldn't team up. Look, I'm only talking to you because Harvey asked, trusting a friend to know what's best for Gotham. Now that's a predicament. You listen to me, kid. I know somewhere inside that tuxedo you understand this situation. Money gets money. The risks, the alliances, the hidden costs. Your father knew which hands to shake. अच्छा. And which to break. Whatever you say. You're a good kid. You look like him, you know? It's nice that we understand each other. Master Bruce, your guests are leaving. I recommend seeing them. भाई मैंने इससे हाथ मिला लिया गाइस. Hey, I appreciate the hospitality, Mr. Wayne. But I don't think I'll put an offer on the house. A nice guy like you should have a nice place to live. I'll be seeing you, Bruce, while this city's still standing. तो गाइस इस बार मैंने ऑप्शंस कुछ अलग सा सिलेक्ट किया है. तो ये तो अभी समा बन रहा था गाइस, इसके आगे तो भी एक्चुअली गेम स्टार्ट होने वाला है. ये तो कुछ भी नहीं था. अब एक्चुअल में एपिसोड स्टार्ट होगा गाइस. गेम को सेव होने दो. लंबी एपिसोड चलेगी तो दिल थाम के बैठे रहो, मूवी देखते रहो और तुम्हें मजा आएगा. मतलब आगे जान कि एक्चुअल में क्या हो रहा है. जल्दी से आ जाओ मेरे भाई. भाई कितना देर से लोड कर रहा है भाई, जल्दी आ जाओ. गजब ले रहा है टाइम यार. भाई जब ये लोड हो रहा है, लोड हो रहा है भाई, लोड हो रहा है, क्या ही कर सकते हैं. लोड हो रहा है तो हो रहा है. तो लेट इट लोड. उसके बाद फिर जैसे ही गेम स्टार्ट होगा फिर तुम्हें दिखाते हैं क्या हो रहा है. आ जाओ. अबे कितना टाइम ले रहा है, कितना टाइम ले रहा है भाई. बहुत टाइम ले रहा है गाइस. बहुत ही टाइम ले रहा है. तो वेट करते हैं, मतलब क्योंकि लोड तो होना ही. अब स्टार्ट हो गया. चलो मैं लिफ्ट से नीचे उतर रहा हूँ और याद कर रहा हूँ उस लड़की के बारे में जिसने मुझे मारा था गाइस, नाखून से. द कैट वुमन. It's me. तो मैं अपने रूम के अंदर आ गया हूँ. देख रहे हो मेरा बैटमैन वाला गाड़ी. तो दिस इज एपिसोड 1 और यहाँ से एक्चुअल में ये एपिसोड ओपन अप हो रहा है और इस एपिसोड 1 का नाम है रेल्म ऑफ शैडोज. या बहुत ही अल्टीमेट गेम प्ले है एक स्टोरी टेलिंग के साथ. तो इसमें खासकर आप लोग को
ऑप्शंस एक्सरसाइज करना रहता है, उसके अकॉर्डिंग गेम प्ले हुआ था। बट ऐसा कुछ नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा इसमें से आप कुछ कर सकते हैं अपने मन का, और चीज़ें नहीं है, क्योंकि स्टोरी के अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ रहा है। ये टिकट है भाई, टिकट है। Custody this evening after a break-in at City Hall. But thanks to the efforts of the Batman, the stolen items were returned. Not all of them. Let's see what she was really after. Allegations that Dent may have actually been in हाँ, तो ये बाकी सारी चीज़ ने वापस कर दिया था, बट ये जो है ना, ये वापस नहीं किया था। really think these accusations hold any water with the voters? Will it be perceived as a desperate attempt from a flailing campaign to take down one of Gotham's most कौन क्या है? young politicians? ठीक है, थॉमस मार्था वेन वहाँ पे हमने मिली थी, तो ये जो मेरे फादर हो गए, ठीक है, फादर और मदर हैं, और ये लोग जो हैं वे एंटरप्राइज के फाउंडर्स हैं, जो कि मेरे को मिल गया। और एक जो चिल्कर के बंदा था जिन्होंने ये मर्डर कर दिया है गाइस ड्यूरिंग अ रॉबरी। ठीक है, ये अल्फ्रेड है जिसने मुझे रेज अप होता है रेज किया है बचपन से, एंड ही नोज एंटायर सीक्रेट ऑफ द फैमिली। ये है अभी हार्वी डेंट जो कि मेयर बनना चाहता है, और इसका पास्ट क्लीन रहा है, बट जिस वे से ये एडवांस कर रहा है एंड ट्राइंग टू नो टेक हैंड्स विद द क्रिमिनल पीपल, आई हाईली डाउट हिम एज अ मेयर। तो आई थिंक उसकी कैंडिडेट मुझे नहीं पसंद है, ऑल्दो उसकी बैकग्राउंड ठीक रही है अभी तक का, बट द वे ही इज प्रोसीडिंग आई थिंक नहीं, ये एकदम गलत चल रहा है। जैसे उसने फाल्कोनी का यूज करने की कोशिश की है, ऑल्दो आई जस्ट हैव गिवन माय नॉट इनिशियली जस्ट बिकॉज हार्वी इज माय फ्रेंड, दैट्स इट। और अभी तो ये हैमिल्टन हिल है जो कि अभी प्रेजेंट में गॉथम सिटी का मेयर है, एंड ही होल्ड्स अ लॉट ऑफ पावर, और ही इज सस्पेक्टेड ऑफ न्यूमरस क्राइम्स, और ये भी किसी न किसी वे में एक तरह का क्रिमिनल ही है गाइज। और आगे देखते हैं, मतलब इसकी पूरी जो गवर्नमेंट है, पूरी करप्ट गवर्नमेंट है, इसीलिए आप देख रहे हो कि गौतम सिटी में इतना उल्टा पुल्टा कांड हो रहे हैं। कैट वुमन जो आज हमें मिली, ठीक है, और इसके बारे में कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है गाइस। बाय द वे मैंने इसको मार के चश्मा तोड़ दिया है सर गाइस। ये इसको मैं ऑज बोलता हूँ, ठीक है। इसका नाम एक्चुअली में या तो बहुत लोग इसको पेंगुइन के नाम से बोलते हैं, नहीं तो ऑस्वाल्ड कॉबलपॉट के नाम से है। ये थोड़ा सा इसके पेरेंट्स लोग भी मर गए हैं, एंड ये थोड़ा सा एस्ट्रे हो गया, एंड हिज एस्पिरेशंस हैव, मतलब इसने बहुत अलग ही टाइप का क्रिमिनल पाथ टाइप का ले लिया, एंड इसीलिए ही वॉज वेरी गुड चाइल्ड। अभी 2 डिकेड से ये बहुत ही बदमाश गाइस हो गया, बहुत ही बदमाश हो गया। तो ये तो गॉर्डन हो गया भाई, आप जान ही रहे हो, ये पहले यूएसएमसी में था, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स के मरीन कॉर्प्स में था, एंड इसके बाद बहुत सारे काम किए, एंड ही इज अ वेरी ट्रस्टवर्दी पर्सन, और इसीलिए थोड़ा सा टाइट बंदा है, मतलब समझ रहे हो ना, सख्त लौंडा वैसा टाइप का बंदा है। So she is Vicky Vale, जिसका मतलब जर्नलिज्म इज ओपी, और इज चार्मिंग बाय द वे, एंड शी नोज लॉट मेनी थिंग्स कंपेयर टू मी, बिकॉज वो होता है ना, ग्राउंड वर्क कर रही होती है, बहुत लोगों से मिलती है, तो बहुत तरह के इन्फॉर्मेशन इसके पास है, and I might be taking her help in coming future. तो आपने देख लिया कार्माइन फाल्कोन के बारे में, और ये एंड दिस ही इज अ स्काईलाइन क्लब ओनर। स्काईलाइन करके एक बिल्डिंग है, उसमें जो क्लब बना हुआ है, मतलब बेसिकली स्काईलाइन क्लब बोल सकते हो, उसका ओनर है। और भाई क्राइम मास्टर गोगो है गाइस, क्राइम मास्टर गोगो है ये,
ठीक है, ये हमेशा क्राइम में ज़्यादा बिलीव करता है, हर चीज़ को कंट्रोल करना चाहता है थ्रू क्राइम, तो इसका रेपुटेशन उसी टाइप का है, क्राइम मास्टर गोगो वाला। तो गौतम की जो पॉपुलेशन है, यू कैन सी इट्स 10 मिलियन अप्रॉक्सीमेटली 1 करोड़, और इट्स अ वेरी हाई पॉपुलेशन गाइस। तो सारा इन्फॉर्मेशन देख लिया हम लोग यहाँ पे, गौतम की क्या पॉपुलेशन है, कौन कौन लोग क्या है। ये आर्कम असाइलम है, इसके बारे में भी बातें हो रही थी, और ये एक समय में बहुत उतना हाई सिक्योरिटी साइकेट्रिक हॉस्पिटल था, जो कि अभी बहुत ही डिलापिडेटेड कंडीशन में, मतलब बहुत ही टूटा फूटे कंडीशन में, और ये मतलब अभी इसको रेनोवेशन वर्क इसमें चाहिए मतलब। और इसी को रेनोवेट करने की बातें कर रहा था हार्वी, और हार्वी इसी चीज़ को पिच कर रहा था, जो दूसरे 2 लोग आए हुए थे ना, जिन्होंने सपोर्ट करने की बात कही थी, उनको 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 पिच किया गया है। और मुझे लगता है कि दे विल बी मच मोर इंटरेस्टेड, बिकॉज उनको लगा कि नहीं, ये प्रॉपर्टी पे बनेगा, कुछ अच्छा बनेगा सोसाइटी के लिए, देयरफॉर वी शुड सपोर्ट हार्वी। तो उस टाइप का है, और मे बी इसको आने वाले टाइम में आर्कम असाइलम को यूज किया जाएगा। पुरानी बिल्डिंग है बाय द वे। तो दिस इज वेनी एंटरप्राइजेज, तो यही बिल्डिंग है, मतलब मेरे बिल्डिंग है, मेरा ऑफिस है गाइस, समझे। और गौतम की सबसे ऊंची बिल्डिंग है कह सकते हो, जहाँ से सारी ऑपरेशन का वर्क होता है। बट मैं ज़्यादा उतना इंटरेस्ट नहीं लेता, मैं ज़्यादा अपने पर्सनल स्टफ्स में ज़्यादा इंटरेस्ट लेता हूँ। ये कर लिया। तो मतलब एक तरह से हिल का और मतलब हिल का और हार्वी का बड़ा आपस में थोड़ा सा फाइट चल रहा है। Successful convictions, District Attorney Harvey Dent just might be the hero Gotham needs. But he can't save our city alone. He needs your help. He believes that together we can make a dent. डाटा पोर्ट पे चलते हैं गाइस, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। वो ड्राइव को लगा के देखते हैं और देखते हैं इसमें क्या है। अबे ये हटाओ ना। मूवी टिकट क्या करेंगे? अच्छा हाँ, डाटा ड्राइव यहाँ रखा हुआ है गाइस। अब इसको चेक करना पड़ेगा कि भाई है क्या इस डेटा पॉइंट में, ठीक है। तो डेटा ड्राइव को यहाँ से चेक करते हैं। देखो क्या अल्टीमेट भाई चेयर निकला है भाई, इस पर मैं बैठ कर भी डेटा करूँगा। डेटा ओके, एनक्रिप्टेड है गाइस, इसको ओपन करना पड़ेगा। 7 bedrooms, 2 kitchens, a library, a gymnasium, a basketball court and a movie theater. And yet I always find you here. In a dark, damp cave. In front of a computer. I'm more at home here than the rest of the house, you know that. Then we should build an 8th bedroom down here. Sure, I can see the headlines now.
Bruce Wayne, billionaire, entrepreneur, cave dweller. Quite an eclectic resume. Did you find out what that Catwoman tried to steal? Well, in the process. What are we looking at? Let me try a different angle. चलो डिफरेंट एंगल ट्राई करते हैं गाइस. ओके तो बैक में हमें ये देखना है और ये इससे पता चल जाएगा. This is a map of the east side shoreline. But it could mean any number of things. Money, weapons, drugs, everything flows through that port. Maybe it's where Mayor Hill picks up his dry cleaning. Can't make sense of it yet. There's still plenty of files to decrypt. And in the meantime, I saved you what I could. Thanks, Al. नहीं यार चाय ले लो यार चाय ले लो. I had to literally pry Mrs. Zellerback away. मतलब इसकी चाय देख के मुझे चाय पीने का मन कर रहा है लिटरली. Mr. Falcone. I would have been tempted to be far less polite. I'd recommend leaving the fistfights to your alter ego. Bloodstains are much harder to remove from a tuxedo. It was a keep your enemies closer situation. Hopefully not close enough to stab you in the back. सही For the बोल रहा है. record, your father despised men like Falcone, thought they ruined Gotham's stellar reputation. Back when it still had one? It can again, Bruce. Though people like this Catwoman aren't helping. Is she new to town? Never seen her before. लग तो रही है भाई She's just न्यू a है. tourist. No, I already checked the codex. Not much to find, apparently. Few burglaries, break-ins. Seems to lay pretty low. You could learn a thing or two from her. You can't step outside without it ending up in the news lately. As Bruce or Batman. That's not the point. I want criminals to know I'm out there. Batman isn't hiding from anybody. I was talking about Bruce. ओ भाई ब्रूस तो ले मतलब ये अल्फ्रेड तो ले ली मैंने. Trust me. Miss Vale noticed your injuries, so did Mr. Dent. If they put it together with the incident at the mayor's office, it would undo all the long nights and close calls we've endured to get here. You're in the spotlight more than ever. You have to be careful. I've had to cover for mysterious injuries before. You've been lucky. Or I'm just a really good liar. A necessary evil in your line of work, I suppose. Though I हाँ hope भाई you सही बात change है. careers someday. Old men worry, that's all. It's our gift and our curse. One more worry for the list. सही में यार मतलब हार्वी डेंट भी वरी के लिए है क्योंकि अल्फ्रेड बता रहा है मेरे को बार बार पॉइंट कर रहा है. इसके पीछे में कुछ लिखा हुआ है. ओके ओके. नॉट हार्वी डेंट बट ऑज है. ऑज ने मेरे को बुलाया हुआ है पार्क में एंड वी हैव टू गो टू द पार्क. और एक टाइम पे हम दोनों बचपन में फ्रेंड हुआ करते थे. आई स्टिल ट्रीट हिम एज अ फ्रेंड बट ये थोड़ा सा अलग वे ले लिया है. Illegal boxing matches, arms dealing, prison stints. It's a criminal grand slam, if I'm using the expression correctly. Fortunately, you are. Oswald claimed he only wanted to catch up, but his behavior following his family's collapse is troubling. Okay. He's returning now. I haven't the faintest idea. Do you think he might know something about the break-in? This Catwoman shows up around the same time Oswald comes back to town. Might not be a coincidence. Oswald's crimes, numerous they may be, are on a much smaller scale than robbing City Hall. Well, he was always trouble growing up, but it's the fun kind of trouble. You both were. Even though you and young Master Cobblepot used to be close, I'd advise you to be cautious. But I know you can't abandon a good mystery until it's solved. I'll be careful, Alfred. When you see what's become of his park, I think you will. ठीक है ये पार्क में जाना है अभी हम लोग को. ऑजे से मिलने के लिए मतलब ऑज से मिलने के लिए जो भी है यार जिसको पेंगुइन के नाम से भी बोलते हैं उससे मिलने के लिए जाना है. एंड ही वाज माय चाइल्डहुड फ्रेंड. अब देखते हैं वहाँ पे क्या बातें होती हैं उससे पता चलेगा.
गेम इज लोडिंग। तो बेसिकली अभी जितना भी हमने खेला है ना वो एक्चुअली सेव कर रहा है अभी। जब सेव हो जाएगा पूरा उसके बाद फिर गेम आगे बढ़ता है, ठीक है। तो पहले पूरी फाइल्स को सेव कर लेता है वो, उसके बाद गेम लोड होती है, नया एपिसोड मतलब नया पार्ट, ठीक है। तो अभी भी हम लोग अभी एपिसोड एंड वी आर येट टू फिगर आउट कि हो क्या रहा है टोटल। बहुत सारी ये लंबी एपिसोड से गई, मतलब बहुत लंबी चलती है ये, ठीक है। बट बहुत ही फंटास्टिक है, तुम्हें मजा आएगा, इसलिए मैं बीच में जितने ज़्यादा बोल नहीं रहा हूँ। जी हाँ, कॉबल पॉट पार्क, मतलब ये जो पार्क है ना औजी का ही है, उसके फैमिली का था ये पार्क। और इसी पार्क में वो मिलने, मतलब हमारी बचपन यहीं पे गुजरी थी, एक तरह से कह सकते हो। बचपन हम लोग यहीं खेलने आते थे। बेटा तुम्हारे लक्षण सही नहीं लग रहे हैं बेटा, ये यहाँ कर क्या रहा है भाई? ये बंदा कर क्या रहा है? घूसा वूसा मारने का रहता था, मारता एक टन से, बट नहीं है। गई ग्राफिटी ग्राफिटी बना हुआ है, एक कंटाप देता है उसको। इस भिखारी को पैसे दे देते साला, उसके बाद दारू पीता रहेगा। Thank you, sir. हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, दारू पियो खूब मन लगा के। यार मैं मैसेज आ रहा है गाइस। Great. ओके, The statue, but no eyes. और थोड़ा लेट हो गया है गाइस, तो थोड़ा आराम से आएगा। वो बोल रहा है कि वो दारू पी के आएगा। भाई ये सब को देख रहे हो, ये सब लोग जो है ना यहाँ पे, ये मुझे सही नहीं लग रहे हैं। शॉपिंग कार्ट देख के क्या करूँगा? अब ये अब देख रहे हो अरे वापस जा सकते हैं, वापस जा सकते हैं भाई। वाह वाह वाह, तो मैं तो बाहर ही आ जाता ना। ये तो पता ही नहीं था कि भाई वापस भी आ सकते हैं। बैठने का ऑप्शन है। अब मैं वापस क्यों आ गया, इसके पीछे रीजन है, मुझे पता है कि आगे क्या होने वाला है। जो चलते हैं यार, चलते हैं। अरे कैश तो उसको दे दी है तो ये कुछ मतलब नहीं। चल बे चल, चल आगे चल, आगे चल। थोड़ा हाथ ताप लेते हैं, तुम्हें पता नहीं है बट यहाँ पे हाथ ताप सकते हैं हम लोग। ठीक है, मैं हीरो बन के आ गया उस सेट में। वहाँ पे विंटर सीजन है गाइस। चलो यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे फाइट होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे गुंडे लोग इसीलिए है, फाइट करने के लिए। क्यों बात करें इससे? ये उसके फादर है गाइस। देखो आगे गुंडे लोग आ गए, गुंडे लोग, Wallet cash. गुंडे लोग आ गए। But this goes through you. गुंडे लोग आ गए। Hey, you heard it, man. The hell are you waiting for? जस्ट वॉक You're अवे। making a mistake. You already made one coming here. The next one kills you. And him. Gentlemen! Oz. Keep walking, all right? This don't concern you, twerp. You see, that's where you're mistaken. My old mate and I have some catching up to do. And you're... The movement! Come here. Think that'll do? Stay down! रे बेचारा, Used to be a बेचारा, No life like बंदूक रहने के बाद भी कुछ नहीं कर पाया। क्या गधा आदमी है। ओ शिट 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 शिट। अबे मैं तो कुछ मार नहीं रहा, ये बंदा मारे जा रहा है ऐसे। Mine! You hear that?
ये बंदे का पार्क है भाई, इसके Oh, फादर का hey, बनाया हुआ Bruce. पार्क है। You've got a little, Yeah, good as new. Woo! That was a right little scrap, eh? Nothing kickstarts the system like a dash of adrenaline, eh? You didn't need to take it so far. Some folks are fine hearing, Bruce. Others don't get the message unless it's beaten into them. It's been what? 2 decades? हाँ भाई। And you know what? I haven't been mugged once that entire time. That wasn't why I brought you here, mate. Right now, I am trying to recognize the little Bruce I used to run around this place with. Back when it wasn't... तो हम दोनों यहाँ पे आते थे और यहाँ पे खेलते थे guys। This park used to mean something. A place that was safe for kids, for families. People came from all over to visit. Oh, Mum and Dad, they put so much work in here. Well, those were better days. That they were. Yeah. Thought we'd grow up to be kings, I did. Both of us. This city chews right through people. बेचारा दारू पी रहा है यार। Committed to Arkham. Dad ended it himself, he did. My family's fortune. There's nothing left, Bruce. I know. Alfred told me. It's funny, huh? No, yeah, it's not funny, They bro. ground my family to dust. Gave you the good life. Used to run in the same circles we did. Hobnobbing parties, round the world vacations, unlimited potential. My parents are gone too, Oz. I know, Bruce, I know. I'm sorry for it. But I had my own funerals to attend. Good to know you haven't changed, Bruce. You still care about something more than just yourself. Although, I was surprised to see Carmine Falcone at your party last night. Made himself right at home. That oily... Oh, wish I could have punched that grin to the back of his throat. No. I only agreed to meet him because of Harvey. Beware of any man who smiles that much, Bruce. They're usually hiding a forked tongue. सही बात है। Falcone made a stack of cash and corpses a mile high, ruining families like mine. All he needs is a little push. And... it'll be a treat to watch him at pavement. Sorry, mate. This reunion got a lot more grim than I planned. Things are going to be on the upswing soon, no? अभी अपना प्लान बताएगा। Revolution is knocking on Gotham's door, and I'm here to let it in. लो बता रहा है। Which brings me to you, Bruce. You see, you throw a rock in any direction, you break a window that Wayne Enterprises owns. As the rich and powerful go, oh, you top Gotham's list. But when my revolution starts, we're gonna smash windows and cross off names all the way down. Like I said, it's not gonna be pretty. It's gonna be beautiful. Are you threatening me, Oz? Take it as you like. I've got great affection for you, Bruce. I really do. Which is why I'm warning you. When this whole thing starts, make sure you're on the right side. बेटा, मतलब ये चाह रहा है कि तुम मेरे साइड आ जाना। Good seeing you, Bruce, but I got some rocks to collect. Cheers. Guys, this is going to be intense क्योंकि एक तूफान आने वाला है। चलो एक मीटिंग अटेंड करना है गाइस। एक मीटिंग अटेंड करनी है। ये है आर्कम, तो यहाँ पे भी आएंगे, यहाँ पे एक मीटिंग होनी है और ये एक मेमोरियल हॉस्पिटल में कन्वर्ट होगा गाइस।
मेड पॉसिबल बाय वेन एंटरप्राइज, देखते हो सारी जगह मेरे पैसे लगे हुए हैं। Mr. Wayne, over here, right here. This way. Bruce! Oh, okay. Pretty sure you have enough photos, guys. Of Bruce Wayne? Never. Morning, Mr. Dent. Hey, Bruce, you mind if we swap cars? I mean, mine isn't fast and the paint's rusting off, but boy, does she have charm. We didn't bring you all out here to discuss cars, honestly. Now, we're here about Arkham Asylum. Ever since it opened its doors, Arkham has been a breeding ground for the criminally insane. Its methods for rehabilitation, crude. Its security, lacking. Worse still, those who do get out, or God forbid escape, are even more dangerous than before they went in. Arkham Asylum is a cancer on Gotham. But today, with a sizable contribution from this man here, we break ground on a state-of-the-art mental health care facility. One that will improve the well-being of Gotham and its citizens for years to come. And Mr. Wayne has a few words he'd like to say. Bruce? For those with mental health issues, there are no cuts or scrapes. Their ailments are often invisible, but inside, they're suffering. You know, when I was 9 years old, my parents took me to see a movie about a hero in a mask. It was a hero who stood up to oppression and defended the people from injustice, no matter the cost. That night, my parents paid the ultimate cost defending me from a man who needed the kind of help this new facility will provide. With this facility and our next mayor, we can put a dent in crime. Today, on the anniversary of that fateful night, we dedicate this facility to Thomas and Martha Wayne and usher in a new era of healing for Gotham. I'm sure you all have plenty of questions about the new hospital, so let's open it up. You first, Miss Vale. Thank you. With the opening of this new hospital, what does this mean for Arkham Asylum? What happens to the old building? We should tear down the walls and erase it from the map. I don't want us lingering on past mistakes. I want us to focus on Gotham's future. All right, who's up next? You there. Mr. Wayne, Julia Remark of the Tribune. My sources say you welcomed alleged mob boss Carmine Falcone into your home. You and Mr. Dent even spoke with him behind closed doors. Harvey is the one who invited him, Bruce. Personally, I would never welcome that man into my home. Anyone else have a question? Please keep your questions on topic, people. We're here about the hospital, remember? But Mr. Wayne, this morning the Globe received evidence of an offshore bank account managed by Carmine Falcone and your father, Thomas Wayne. What exactly are you implying? Transactions connected to organized crime, going back years, and continuing to this day. The paper trail ties your family directly to the mob. ये तो चेक करना पड़ेगा भाई, ये तो नया। And did anyone else receive this evidence? The Globe, the Gazette, we all did. Mr. Wayne, is all your money dirty? Is the Wayne family legacy built on lies? Did you know about this, Bruce? How long has your family been dealing with Falcone? Could the allegations be true? What aren't you telling us? Does the mob sign Wayne Enterprises paychecks? I think you should check your source. Sounds to me like an intern is finally putting their creative writing minor to good use.
Mr. Wayne! Mr. Wayne! How long has your family been dealing with Falcone? Could the allegations अबे यार क्या हो रहा है? Did you know about this, Bruce? What are you telling us? I'm sorry about this, Bruce. I don't know where the hell it's coming from. Damage control's my territory. We'll talk later. Everyone, please settle down. I'll be fielding your questions from here on out. Please, let's try to keep this civilized. Bruce, I've been trying to reach you. The police are inside the manor. भाई अब मैनर में जाना पड़ेगा भाई, क्या हो रहा है वहाँ पे? देखते गाइस, अभी मैनर पे जाने का मतलब, मैनर मतलब एक तरह से मेरा घर ही है, जहाँ पे वो आए कमीशन, मतलब जहाँ पे अभी पार्टी थ्रो हुई थी ना, जहाँ पे डोनेशन के लिए पार्टियाँ हो रही थी, चैरिटी काइंड ऑफ थिंग और डोनेशन काइंड ऑफ थिंग, तो लोग यहीं पे आए हैं और पता नहीं क्यों आए हैं यहाँ पे. I'm afraid we can't, Mr. Wayne. Says who? This warrant. किसने बांट? It's not personal. I had the boys turn the lights off, keep a low profile. There's gotta be a mistake. That's what we're here to find out. Maybe we made a mistake. Maybe you did. Alfred, keep an eye on them. Make sure they only take what they have to. Of course, sir. I meant what I said about not personal. We only want files related to Wayne Enterprises. The warrant covers your place, pardon me, places of residence, and any companies you own. Your holdings are extensive. Hate to be the guy doing your taxes. Who authorized this? I know you and the DA are buddy-buddy, but this one came from the top. It's a valid warrant. I gotta serve it. Mayor Hill signed off on this himself. अच्छा. As long as he's mayor, he calls the shots. Well, Hill has a history of making his opposition disappear. Rumors and allegations, Mr. Wayne, that's all. But if they become fact, I'll handcuff him myself, same as any other crook. I don't know how your neck ended up on Mayor Hill's shopping block, but here we are. Hill knows if I go down, Harvey's campaign goes down too. That'd be a real shame. Mr. Dent's the only DA I ever trusted to make a conviction stick. As mayor, I think he can finally turn things around for us. For all our sakes, I pray you've got nothing to hide. ठीक है भाई, लेके जा, जो लेके जाना लेके जा. शीशा तोड़ दिया भाई, फोटो के शीशे तोड़ दिए इन्होंने. फैमिली फोटो है गाइस. मैं छोटा सा बच्चा, यानी कि बैटमैन और उसके फादर मदर, ठीक है, वेन और मार्था. इस इंसिडेंट के चलते मुझे बैटमैन बन गया पड़ा, बैटमैन बनना पड़ गया गाइस. कुछ नहीं कर सकता था उस समय. हम लोग मूवी देखने जाने वाले थे और यही दो मूवी, तीन मूवी की टिकट है. सब लोग मर गए. Bruce? I didn't mean to interrupt, but... This is the second time you've shown up uninvited. Well, it's difficult to book a meeting with you. Well, I enjoy my privacy. Enjoyed. Past tense. Sorry, but if the press has their way, you're not gonna have any for a while. चलो ठीक है, बात कर लेते हैं इससे. Listen, Bruce. A scandal surrounding a beloved family like yours captures the public's attention. I can help you get the right kind of attention. Through my connections at the Gazette, I have all kinds of access. I can dig up whatever you need to fight this. I appreciate the offer, Miss Vale, but trying to say I'm the good guy here instantly makes you look bad. Yes. I get it. So let me say it for you. The Gazette received this supposed evidence like every other media outlet, and it's all hearsay,
flimsy sources, there isn't a shred of hard proof. Still, allegations like this, they don't magically appear. Someone is going after my family, after me. Obviously, the sender didn't identify themselves. We have no idea who it could be. I mean, no one's even done their due diligence on this yet. The press saw the fumble, they grabbed the ball and ran. Hill wants me out of the picture because with my backing, Harvey wins in a landslide. All signs point to Hill. You're a kingmaker, Mr. Wayne. And Harvey Dent is Gotham's knight in shining armor just waiting for the crown. You're the first target on Hill's list. सही बात है. By tonight, this scandal will be broadcast to every screen in Gotham. Everyone will be talking about it. This isn't my first pass through the rumor mill. I know the damage it can do. Then go on the record. Right here, right now, and stop it. You need to get out ahead of this. Your side is what matters. चलो ठीक है, कोड दे देते हैं guys. On the record then. Whenever you're ready. I'm ready. This story about my family is exactly that. A story. It's a work of fiction all the way through. That's exactly what the people of Gotham need to hear. अरे कोई भी ऑप्शन लेता तो यही बोलती. Anyways, ठीक है. You're gonna beat this, Bruce. The Waynes always come out on top. Goodbye, Miss Vale. Too direct. तू आ साथ में आ. कॉफी पियेंगे साथ में. I hate to admit it, but everyone smells smoke. A fire is heading this way. Batman. Yes, Alfred. My family. We've done nothing but support Gotham, even in its darkest days. All this on the anniversary of your parents. It's not a coincidence. Harvey's the district attorney. He should have told me this was coming. Then find out why he didn't. सही बात है भाई. हार्वी को तो पता था ये हो सकता है, बट हार्वी ने बताया नहीं. तो समथिंग इज कुकिंग इन हार्वीज बैकयार्ड आल्सो. तो हमें जानना पड़ेगा भाई क्या है, था क्या हो रहा है, क्यों हार्वी मेरे साथ लुका छुपी खेल रहा है. मतलब इसके कैंप पे मैं पैसे लगाऊंगा और वो हीरो बन रहा है. इतना बड़ा आदमी हूँ या पैदल घूम रहा हूँ मैं. A warrant? What the hell's going on? Wait, does this have to do with what the reporters were talking about this morning? That press conference turned into a bloodbath. I'm in a lot of trouble, Harvey, and I need your help to get me out of it. Yes, of course. Of course, whatever I can do. Mayor Hill authorized this? Yeah, then the cops raid my house, taking everything related to Wayne Enterprises. Computers, hard drives, files. Oh, son of a bitch. You're the goddamn DA, Harvey. I didn't know about this. I swear. झूठ बोल रहा Hill है. totally blindsided me on this one. God damn it. He has no right to issue search warrants without my okay. Well, that's just not good enough, Harvey. Listen, I'll look into this. I swear. I just don't get it. Why would Hill stick his neck out over this? Just to tangle you up in some frivolous investigation? It just doesn't make sense. I mean, what could he possibly hope to accomplish other than a few cheap headlines? It's got to be politically motivated. Hill can't match your fundraising, so he's trying to take out your biggest donor. I don't know. This is a new low, even for Hill. यही बात. Oh, God, what a mess. Bruce, I wish I could just make this go away, but I'm not sure if I can. If I don't get in the way of this investigation, Hill would be able to spin it as a conflict of interest. And that wouldn't be good for either of us. It would jeopardize the entire campaign. Then I'll go it alone. I've got plenty of resources to fight this. We're in a bind here, Bruce. I'll do whatever I can to help. There you are. Hey, you? अरे देखो यही लेवल लड़की है गाइस, जिसका मैंने आज आँख पे मार के फोड़ दिया है. देखो, और ये हार्वी की लैला बन के यहाँ घूम रही है. अब वो मेरे को देख के पहचान जाएगा, मैं उसको देख के पहचान Tell me you जाऊँ. were bringing a friend to dinner. This is Selena. I hope I'm not interrupting anything. Just election nonsense.
I think we'd both welcome a change of topic. Harvey never mentioned you before. Oh, really? That's interesting. What was your name again? It's Selena. Selena Kyle. Selena Kyle. It's a strong grip you've got there. Don't worry. I'm not gonna fall. Oh, right. Sorry. Selena's new to town. I've been showing her around Gotham, introducing her to people. You're an excellent tour guide, Harv. Well, if I lose the election, I guess I can drive one of those double-decker tour buses around town. So, Miss Kyle, what brings you to Gotham? Business. Well, let's just hope she stays after what happened last night. I was mugged. अच्छा I'm shoot. just angry I let that masked freak get away with all my stuff. I still can't believe I let you walk home alone. I should have called you a car. It's not your fault. Well, that's terrible. Did they catch the guy? Not yet. But if they don't, I will. It's probably long gone by now, whatever that idiot took. I hope not. These were important materials. Oh, sensitive? Very. I don't know how I'm gonna explain this to my client. When things like this happen in my line of work, people tend to overreact. We should just be thankful you got away with a black eye. So, what do you do for a living? It's complicated. High risk, high reward. अच्छा Stock market, huh? Something like that. At least I'm not the मैं भी only प्ले one करो लड़की भी मेरे से प्ले कर रही है That भाई press मतलब conference? मेरे को आउट स्मार्ट करने की कोशिश कर We've रही है got it आउट under प्ले control. करने की कोशिश कर Do रही है you? I'll handle it. Someone at my office has to know what's going on. Excuse me a moment. Hey, it's Harvey. अब असली बात होगा देखो अब असली बात होगा भाई लड़की कितनी सौती रही और देख रहे हो इसकी आंखें देख रहे हो देखो भाई साहब भाई साहब Nice to meet the real you. Likewise. This explains a lot, actually. How you can afford the fancy armor, the toys. Wouldn't Harvey be surprised? Not to mention, everyone in this cafe. What do you want with Harvey? Don't worry about your friend. My interest in him is personal. shoot shoot Don't worry. I'm not gonna expose you. Yet. I'm मेरे को curious, एक्सपोज करके भी क्या कर लेगी I do what I do for money, but you're Bruce Wayne. What's your excuse? I have to. But you, why take the risk? I don't need one. I do this because I can. And I thought you were on some noble crusade against crime. Silly me. You have something that belongs to me. I want it back. क्यों This is awkward for me. I'm used to robbing people, not the one being robbed. Who hired you to break into the mayor's office? My clients prefer to remain confidential. They don't know who I am. I don't know who they are. But you know who I am. These people I'm working for, they don't screw around. If I fail to deliver that drive, it's gonna cost a lot more than money. Well, looks like you've made your bed. No, we've made this bed, and I'm not gonna lie in it alone. You owe me. why If I they owe don't get you what they want, there will be consequences. I don't owe you anything. As far as I'm concerned, you're on your own. Huh. I was hoping we could work together. Sorry. I'm a solo act. well था Listen, I don't have a lot of time. My employer is expecting me to drop it off. Where? Just give it back. The address. Now. No, give me the drive. You're just going to have to trust me. I don't do trust. I guess I'm screwed either way. My contact, he'll be expecting a cat, not a bat. When are you supposed to meet him?
15 minutes ago. What? Better hurry. Everything okay here? Yes, yes. सब You कुछ. tell me. I have my people working on it. We're gonna straighten everything out. I feel better already. Sorry, but I've got to run. So soon? Aren't you gonna stay for a drink? Yes, Yeah, yes. Bruce. I want to. Stay I for a want drink? to. कमीनी, I'd love to, तुमने but अब जो I've काम got दे another दिया है, appointment and I really don't इसका want क्या करेंगे हम? Oh, all right then. Don't forget to change into your suit. हाँ हाँ कमीनी बहुत इंडिकेटिव है, बड़ी हरामी लड़की है यार. देख रहे हो? अब हम लोग जाएंगे उस एड्रेस पे देखने के लिए भाई क्या मच रहा है. ठीक है, तब तक के लिए वेट करो क्या मच रहा है देखने में. ये गेम अभी सेव हो रहा है और जाएगा. गेम थोड़ी लंबी चल रही है guys, और ये चलती रही क्योंकि एपिसोड 1 है लंबी. चलो वहां पे पहुंच गए ना. चलो Alfred, I'm at the warehouse. No sign of Catwoman's contact. It's quiet. The sound of an ambush. Stay on guard. चलो देखे क्या है. अरे ऑप्शन तो आओ. भाई सारे लोग मरे हुए हैं देख लो. सीन सही नहीं है. This wasn't a handoff. It was a massacre. How many? Too many. I'd have to count the pieces. Oh, good lord. Who could have done such a thing? That's what I'm gonna find out. Gordon, चलो. East Side Docks, Warehouse 133. अच्छा तो मैं अभी पुलिस को बुला रहा हूँ. मैं गॉर्डन को बुला रहा हूँ यहाँ पे. Analyzing. It's a volatile chemical. Potential psychoactive nerve agent. Vile stuff. Be very, very careful with that. Who knows what effect it may have? Have the computer catalog the compound for further analysis. As you wish. Nothing left to bury. फट गया है वो. फट गया है. चलो लिंक कर लेते हैं इसको. लिंक करके देखते हैं कि क्या हुआ है एक्चुअली. Whatever exploded did so with enough force to obliterate the person standing next to it. But the chemicals themselves were inert, non-explosive. Well, it appears to have made a pretty big boom. I'll see what I can piece back together. जो केमिकल थी उस डब्बे में वो इनर्ट गए, इसीलिए इसको कुछ हुआ नहीं है. I've seen these outfits before. Same mercs that broke into City Hall. मतलब गुंडे लोग आए हुए हैं और ये कैटवुमन के साथ ही था. इधर भी देख लो. White Rose. यानी कि फाल्कोनी. He's been busy as of late. Send the drones hunting. I want to know his every move. Good thinking, sir. That bad? हाँ भाई. Too bad. Face slashed, throat torn open. So, not natural causes then. देखे भाई. Skyline Club.
ओके, स्काईलाइन क्लब का भी उसके पास है। इसको लिंक करना पड़ेगा, बट लिंक करने से पहले पहले इसको देखेंगे, ये एग्जामिन कर लेते हैं। इसका चेहरा क्यों बर्न हो गया भाई? This man's been badly burned. The damage seems to originate from inside his skull. What did this? चलो चेक किया जाए। Sensors say it's an incendiary round. Phosphorus residue. This could have superheated the contents of the canister, causing the aforementioned boom. देखिए भाई, blood, broken nails, bits of human flesh. इसका मुझे लगता है क्योंकि इसने ही मारा होगा इसको, क्योंकि इसके मुंह पे पूरे खरोच लगे हुए हैं। The cop shredded this merc to pieces, bare-handed. God, what would cause someone to do that? The nerve agent could make them psychotic. ठीक है, बट इसको भी लिंक करना पड़ेगा भाई। Don't think so. No proof. ओके, इसका मतलब कोई और कनेक्ट करना पड़ेगा डॉट। ये क्या है? एग्जामिन कर लेते पहले। The canister exploded, sending shrapnel right through the container door. For once, I'm glad you arrived after the heist. Your armor wouldn't have protected you against that. चलो इसको ओपन करके देखते हैं। कैनिस्टर का एक पोर्शन लगता है ये। Looks like a bullet started this. A normal bullet couldn't have caused that explosion. Doesn't appear normal. The point of entry is melted. अब इसको लिंक करते हैं। इधर भी है कुछ क्या भाई? किसको करे भाई लिंक? इसके पास तो ऑप्शन ही नहीं है। इसके पास है क्या कुछ? ये इसको करते लिंक। कुछ बनेगा? Scrap of metal is from the exploded canister, but I need to know what caused the explosion. ओके, ये तो पता चल रहा है कि उसका पार्ट है, बट
ये कैंसिल करना पड़ेगा। मुझे लग रहा है इन्हीं लोग के पास यही 3-4 ही लोग। अच्छा, ये करके देखे क्या? इसी के पास बुलेट मिला था ना। ना लंबा जाएगा लिंक। तो बुलेट तो आता तो बुलेट इसको छेद किया है। आई थिंक थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मिलेगा मे बी। Find a connection. The bullet that killed the cop is the same type that blew up the canister. I'm sure they didn't find that at a local gun store. ओके, कहीं और से आ रहा है, मतलब क्योंकि डायरेक्शन कहीं और है। इसको देखो, ये क्या है? Something was here when the explosion occurred. दोनों को लिंक करना पड़ेगा भाई। वो गाड़ी का टायर से इसका मतलब कुछ तो है यहाँ पे। Someone drove off after the explosion. Have you put it together? Yes. अब सारा एविडेंस उसको मैच करो। His rose here. This is a message. Dead cops, stolen chemicals. He's making a big move. कि बहुत सारे पुलिस थे और ये लोग भी थे। One of his snipers hit a canister with an incendiary bullet, causing it to superheat and explode. This may have been a distraction or a way of destroying evidence. Cops moved in to stop the theft. Falcone's men gunned them down. Then things turned grim. Possibly due to the psychoactive nerve agent. A cop ripped up a merc's face with his bare hands. And was put down. Same sniper, same type of bullet. Okay. Looks like Falcone's men got what they wanted and escaped. Have you located the shooter? No, but based on 2 impact trajectories, the canister and the dead cop, the shooter could only have a clear shot from there, or there. And would have contaminated himself with the phosphorus residue. Program the skimmers to pick up that signature. चलो देखें। चेक कर लेते हैं अभी पता चल जाएगा क्या है सीन। Both targets could have been shot from here, but no phosphorus trace. फॉस्फोरस का ट्रेस नहीं है यहाँ। कैट हुआ। यहाँ पे फॉस्फोरस के ट्रेस दिख रहे हैं यहाँ पे यार। Phosphorus spike. हाँ तो यहाँ पे तो है। Point. We have a winner. मिल गया। और कुछ चेक कर लेते हैं क्या क्या है। क्या है? Cigarette. Killing time. This is the right spot. So where did he go? पर इसके हाथ के छाप यहीं पे हैं। इसका मतलब अभी गया नहीं है वो। Trace stops here. Then he should be nearby. Found him. Time to go to work.
क्या भाई आवाज चेंज हो जाती है इसका? My turn. Don't make me add your corpse to this graveyard. Falcone, why did he do this? I ain't telling you nothing. You can't make me talk. I ain't telling you, Jack. You trying to scare a confession out of me? I won't break. Your bones will. ओए हाय 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 हाय, अब बोलो। डंडा मिल गया गाइस। It's true what they said about you. You're a freaking animal. Give me a reason to stop. You know you can bleed to death without ever spilling a drop. All on the inside. Tell me the plan, or I start swinging. फिर इसको मारा जरूर जाएगा। Tell me. That Catwoman was supposed to hand over a drive, had the container number we needed, but she flaked. So we had to find it ourselves. Container by container. Someone must have heard us, called the cops. We were told no witnesses. Why risk open war with the GCPD? Some kind of chemicals. Falcone wanted them. What are the chemicals for? We were paid to steal them, not ask questions. हैं? बताएगा। I start here and keep breaking until you answer. The chemicals! There's some kind of explosive! A weapon! I don't know! Falcone said he'd use them soon! Used where? That's all I know! I swear! I swear! I told you everything I know! Oh, God. Jesus Christ. These are cops. Get an ambulance in here! Think I need to call the coroner instead. It's Montoya. Send a cleanup unit to the docks. Warehouse 133. Now put up your hands! Don't move! That man. What did you do to him? Don't move! I did what you couldn't. You're damn right. I'd never do something like this. I got what I needed. You have the right to remain silent. Gordon. I said silent! If you say another word, I will shoot you. I don't care if half the city thinks you're a hero. Right now, you're a suspect. Gordon, tell her to stand down. Don't you dare! You're making a mistake, Detective. You want to hear what I have to say. Falcone stole a shipment of chemicals. Appears to be a weaponized nerve agent. Causes people to go berserk, turn violent. We need to act before he releases it. I got a task force on it. You already have one. You're taking this too far, Bruce. तो गाइस मैंने बता दिया कि फाल्कोनी ऐसा कैसे कर रहा है। अब मुझे नहीं पता गॉर्डन क्या एक्शन लेगा। यहाँ डिटेक्टिव भी मतलब समझ में नहीं आया डिटेक्टिव को क्या करना है, ठीक है। और she might be thinking कि I am able to law। और भाई पुलिस के सामने तुम हीरो बनोगे तो पुलिस तो समझ रहे हो ना, खार खा जाएगी। मैं वहां से निकल लिया। You assume the persona of a bat, but you're not an animal. You beat that man half to death. हाँ तो भाई मारा थोड़ी इसे। Your parents didn't raise you this way. And neither did I. Look, I did what you had to, but at what cost? We both know how this argument goes. Especially now, during this preposterous attack on your family. You must show the world the true nature of a Wayne.
Giving everything to the city and then being murdered for it? My thoughts exactly. Every time you leave this cave. Okay, Alfred, I got you. I got you. You're यहाँ a पे good कुछ guy, updated. Bruce. Good. Just like your parents. Don't lose that. I don't mean to be a doddering old fool on the subject. Trust me, I won't lose my way. It's quite understandable to stray from the path now and again. So long as you can find your way back. You bury the person, Bruce, but you never bury the memory. Sometimes I wish I could. चलो कोई That नहीं. night, that alleyway, it made me who I am. I can't get it out of my head. That is your gift and your curse. Being Batman can allow you to turn back the tide of treachery that's reached this city's shores, or drown you in its sorrow. When you doubt your fate, remember why you started all this. Remember that boy in the alley. I won't forget. Neither will I. चलो भाई डिक्रिप्ट हो गया. देखा जाए. Well, back into the fray again. ये देखना ही पड़ेगा क्या? हाँ, तो ये बात सही है. कैट वुमन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आया हुआ है. ये तो मैं जान ही रहा हूँ. आज क्या भी प्लान जान ही रहे हम लोग. गॉर्डन को भी भाई गॉर्डन को भी मतलब क्या ही बोले, उसको मैंने कोड दे ही दिया है. और फाल्कोने ने भाई केमिकल ले चुका है, तो फाल्कोने के पास केमिकल, तो ये सारी इंफॉर्मेशन तो ऑलरेडी मेरे पास है ही. ठीक है. ठीक है, ये तो भाई करप्शन वाला चार्ज मेरे पे लगा दिया गया झूठ का, बट दैट इज ओनली इन द मीडिया, तो अभी कुछ खासा दिक्कत नहीं है. इसको यूज कर लेते हैं. Well, looks like that egg finally cracked. And inside, Mayor Hill was hiding more than I could have imagined. This is a complete manifest of Carmine Falcone's criminal organization. What in the world was Hill doing with all this? Illegal arms dealing, drug running, mob hits, money laundering? Falcone's been involved in everything. And it goes back years. This is an insurance policy. Hill could expose Falcone if he didn't play along. That would explain why he's never made a move against him. Sure as hell better than any bodyguard. चलो देख लिया जाए. This is it, Alfred. With this proof, we can finally knock out Falcone's organization. Where would we possibly begin to dismantle it? This is a police matter. There's only one cop we can trust to handle this evidence correctly. Lieutenant Gordon. He could mobilize the entire police force against Falcone. What about that reporter from the Gazette? नहीं, Gordon. Yes, Miss Vale. She could release this evidence through proper channels. I suppose it comes down to who you want to help most. Or who you think could do the most good. The cops are on the front lines of this war. Gordon needs this more than anyone. तो गॉर्डन को मैं ट्रस्ट करता हूँ थोड़ा बहुत. We'll attack Falcone on two fronts tonight. Gordon through the police, and Batman. By any means necessary. Whatever Falcone is planning, it ends tonight.
He's a spider, Bruce. Eyes everywhere. A dense web of goons poised to trap you. No one has ever managed to bring him down. I haven't tried yet. सही बात। चलो अब उसके घर लगता है, ठीक है, पिकनिक मनाने। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं शायद फल्कोने के बंगलो होगा, कैसल होगा, आई डू नॉट नो, और कोशिश करेंगे उसको चेक डाउन करने की। अब देखते हैं ये पॉसिबल है कि नहीं। ओके, जाने से पहले मैं गॉर्डन से मिलने के लिए आया हूँ गाइस, और मैं इसको प्रूफ दे रहा हूँ शायद, क्योंकि This is a silver bullet. ओके, तो इसको बैटमैन के बारे में नहीं पता, ये तो मैं ब्रूस वेन बन के आया हूँ यहाँ पे। I don't even want to know where you got this. No, you don't. Still, I gotta know one thing. Why give this to me? Don't get me wrong. I appreciate the hell out of this. Everyone on the Force will too. I heard you were the last honest man on the Force. No need to blow smoke. I got enough cancer coming my way as it is. But thank you. Honestly. Knowing this evidence can lock up Falcone. I'll sleep like a goddamn baby. For once. You know, as much as I appreciate you calling me here, I gotta make one thing crystal. I can't be bought. ठीक है भाई, I'm not buying you. Isn't gonna change a thing about the investigation of your family. कोई दिक्कत नहीं। The Waynes always supported the Gotham police. So I like to believe there's no cloaks or daggers hidden in your closet. The investigation isn't the problem. It's the Wayne family name. Help me clear it. If your family's clean, I'll sing it from the rooftops. If they aren't, I'll still sing. You gotta understand, I'm bound to this badge. सही बात। I gotta go. Came straight from a crime scene. Haven't been home yet. Sometimes I think this whole city's a crime scene. We're just walking through it. What you're holding will make walking it much safer. Thanks, Bruce. Well, Lieutenant? Hey, stick to Jim. जिम कौन है? स्टिक टू जिम बोल रहा है? पता नहीं। It's done. Good. So is our hunt. The drone's located Falcone downtown, a place called the Skyline Club. Though you're not dressed for that kind of party. Well, I can always change in the car. चलो टाइम टू गो। अब इस गाड़ी को कन्वर्ट करेंगे बैटमैन के गाड़ी में। सब कुछ चेंज हो गया गाइस, देख लो। जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। तो हम लोग जा रहे हैं फाल्कोने के घर पे गाइस, स्काईलाइन क्लब पे। बारिश हो रहा है। The drone's cameras and scanning tech are fully functional. All right. Let's find Falcone. चलो देखें। Good point of entry. Tell me another. What's the difference between the Mafia and City Council? I don't know. Aren't they the same thing? Only one of them is organized. Ooh. You're cute. साला फ्लर्ट कर रहा है, बताइए। Not anymore, I'm not.
Where's Nikki? In lockup. Again? Christ, Kimmy. What did they pinch him for now? Some hit down at the docks. Nikki? No. I didn't think he was a hatchet man. You and me both. Well, does he got an alibi? Honey, I'm always his alibi. Make your round? Yeah, no broken bones. Still healing from the last time, I bet. All it took was a couple of C notes this time. Nice and easy. Nice and easy, my ass. I know you burns powder at night. The whole city can smell it. The white rose. Falcone's symbol. A red rose after tonight. Nothing here. Modern art. That's the most heavily guarded door in the building. Gotta be Falcone's hideout. Well, it won't be as easy as ringing the doorbell. 4 armed guards. Stealth not an option. I'll put together a plan of attack. Stand by. चलो तो एक अटैक करने का ऑप्शन बनाया जाए. Couple of options for taking this guy down. ठीक है, इसका ऐसे सर फोड़ा जाएगा. मॉडर्न आर्ट से इसको लिंक करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग. जाएंगे और इसको मॉडर्न आर्ट उठा के इसको ले दिया जाएगा. ठीक है, अभी एक्चुअली हमें प्लान बनाना पड़ेगा कि कैसे सबको मारना है. इधर भी प्लान बनना है क्या? और कोई है क्या? ये बंदा जो पिलर में इसको ऐसे करके मारा जाएगा, ऐसे करके. ये पिलर ही नजदीक है. सब कर दिया ना, और भी कुछ करना है क्या? ये तो बना दिया. और कौन है? This one might be tricky. Any ideas? I've got it covered now. कैसे होगा? Bruce, have you formulated your plan of attack? Yes, I have formulated my plan. I'm going in. Very good, sir. Time to go, guys. Crash his part. Get ready. Get ready. It's time. चुपके से.
ओ हो। ये दो लोग आ रहे हैं। बताइए, गोलियां ढूंढ रहा है भाई ये बंदा। ओह, रूम में घुस गया। ओके। तो अंदर इसमें एएमपी डाल दिया गाइस, क्या कि वो कैमरा यूज कर रहा था मुझे लोकेट करने के लिए। Stay down, Falcone. We can end this now. You got a lot to learn, kid. अरे अरे भाई साहब, अरे भाई साहब क्या कर रहे हो? अपना मशीन चलाना पड़ेगा भाई। Explosives armed. Fire when ready. ओह शिट, यार छोटा सा ड्रोन में इतना पावर है भाई, क्या बात है भाई, क्या बात है। Spare yourself the pain. Yeah, I've been through worse. अच्छा, The chemicals. Where are they? What? I found your calling card at the docks. The White Rose. You think I wanted to lead you here? Yeah, something reeks about this whole thing. And it is a dead bat. अरे यार ये क्या कर रहा है? Still want to play games? We're all being played here, including you. Those chemicals you're so riled up about, they're mine, all right? अरे यार फिर से ये लोग आ गया। But someone is trying to cut me out of the deal, because I did not make that mess at the docks. Then who did? No, we're done. Gotham's watching now. छोड़ देंगे गाइस, इसको छोड़ दिया जाए। देखे Go ahead. Give him a show. I'll be walking free by tomorrow morning. अरेस्ट करवा देते हैं इसको भाई, इसको मारेंगे नहीं। Spill it, Falcone, while you still can. It's the Waynes. They're behind all this. What do you mean? You want to save this city? Well, the Waynes are the biggest gangsters in Gotham. अच्छा, ये तो अब देखना पड़ेगा भाई, ये कैसे हो सकता है भाई? अब पुलिस यहाँ है भाई, हमें निकलना पड़ेगा। बट मैंने उस बंदे को मारा नहीं है। Now we only have to take one of you down. Open fire! कैसा बेवकूफ है यार, मतलब मैं एक तो हेल्प कर रहा हूँ, उसके बाद ये मेरे को गोली मार रही है। तो देखते हैं अभी क्या होने वाला है भाई, गजब है अंदर।
चलो इस फाल्कनी के बच्चे को मैंने पकड़वा दिया है, ठीक है। बहुत सारा डेटा वेटा भी मैंने ऑलरेडी गॉर्डन को दिया हुआ था। होपफुली सारा जितनी भी लिंक्स है वो यूज करके गॉर्डन को, मतलब गॉर्डन यूज करेगा उस सारे डेटाज का अगेंस्ट फाल्कोने, और आई थिंक फाल्कोने जाएगा जेल। तो भी देखते हैं भी क्या होने वाला है। आई थिंक यही होगा, क्योंकि चीजें तो यही है। आई कैन कनेक्ट द डॉट्स। ये देख लेते हैं। जल्दी आ जाओ, जल्दी। अबे आ जाओ यार, इतना वेट क्यों करा रहे हो? वेट करवा रहा है भाई, बहुत वेट करवा रहा है। कोई नहीं, देखते हैं कितनी लंबी एपिसोड है, बट आई थिंक हम लोग अब नियर एंड होंगे, क्योंकि अब इतनी लंबी तो नहीं चलनी चाहिए, पर यू नेवर नो। मुझे लगता है फाइल साइज इतनी बड़ी होती जा रही है, उतना उसको टाइम लग रहा है लोड होने में, और तब अब सेव करने में शायद, आई थिंक। और Fire न्यूज, and smoke could reportedly be seen from street level. चलो आगे। Tonight, the Skyline Club, a high-rise mafia hangout in downtown Gotham, was the arena for a clash between the notorious Batman and alleged mob boss Carmine Falcone. नोटोरियस मेरे को क्यों बोल रहा है भाई? मैंने ही इस बंदे को पहुंचाया है तुम्हारे पास। Falcone loved that view. Though I'd say the crime boss getting his is well overdue, Falcone has slipped through the law's grasp for years. But after this dramatic arrest and evidence released by the GCPD's Lieutenant Gordon, Falcone's going away for a long, long time. And speaking of newly uncovered criminal dealings, this brings me to the story everyone is talking about: the Wayne family. For generations, the big W on the Wayne Enterprises tower was a reassuring sight. You knew that there was something pure at the heart of Gotham, that this city, for all its faults, was built by good people. But with Thomas and Martha's shining reputation called into question, we no longer have such assurances. And even worse, it seems the apple hasn't fallen far from the tree. Gotham's greatest son, Bruce Wayne, seen here in the company of gangsters, may be just as crooked as his parents. भाई मैंने हाथ भी नहीं मिलाया था उससे। Fired back saying, This story about my family is exactly that. A story. It's a work of fiction all the way through. in a world where the Waynes, our golden family, are corrupt, who are we left with? Who can Gothamites look up to? The supposed hero Batman? Only time will tell. Meanwhile, we'll keep digging for the truth. But the prominent feeling throughout Gotham is that the Waynes' time in the sun is ending. ये कैसे भाई? अब आऊंगा यहाँ पे, मैं पूछूंगा इससे चल क्या रहा है। Suit, car, this entire cave. Master Bruce? Everything I built. I created all of this because I didn't want any more innocent people to die. If Falcone's telling the truth about my parents, then what the hell did we do this for? Bruce, What have you been hiding from me? Alfred! देखते हैं भाई अल्फ्रेड बताता है कि नहीं बताता है। ऐसा नहीं हो खत्म हो गया क्या? आई थिंक ये एपिसोड हो गया है ओवर, और जो नेक्स्ट एपिसोड में मेरे को लगता है कि ये अल्फ्रेड मेरे को बताएगा कि वो क्या हाइड कर रहा है। या ओके, तो हम लोगों ने वैसे ही किया। ठीक है, कंटिन्यू। तो आपने देख लिया एपिसोड 1 में क्या स्टोरी बना हुआ है। उतने देर तक हम लोग उसको खेल रहे थे, एंड यू सी भाई when इतनी your सारी parents died, ओ they बता रहा left है me ये। as caretaker of their estate, Okay. their son, and their secrets. I would never betray them. तो मेरे को बता रहा अब।
He told me highly about my family and about my Your parents. parents were good people, Bruce. No matter what that thug Falcone told you. Then swear to me there's no truth to it. The evidence you brought me on Falcone held up. Maybe I misjudged you. Now Batman's beating up mobsters too. Wonder who he's after next. ये बंदा यहाँ पे आया हुआ है. This is Oche. Och. Hell of a view. सामने The Wayne name is toxic. I have to do what's best for my campaign. What's best for Gotham. और ये लड़की मेरे साथ आ जाती है क्या? Distance myself. I will find the truth. Along with anyone who stands in my way. ठीक है. तो गाइस हम लोग ने यहाँ पे अपना एक एपिसोड 1 कंप्लीट कर लिया है. And it was a hell of a story, guys. The next episode is Children of Arkham. The next episode is Children of Arkham, guys. और नेक्स्ट एपिसोड तो नेक्स्ट बार जो नेक्स्ट गेम होगा उसमें आएगा. इस एपिसोड पे तो नहीं आएगा यार. जब से मैंने हेयर कटिंग किया ना, अजीबो गरीब हेयर कटिंग हो गया. मैंने खुद से किया है गाइस, तो थोड़ा सा अप डाउन टाइप के कट गए हैं. पर ठीक है यार, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा. तो कोशिश करेंगे कल जल्दी से सुबह उठने का और कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल का स्ट्रीम करने का. लेट्स ट्राई. और जिनको भी ये स्ट्रीम आज का अच्छा लगा हो, क्योंकि अब तो एक कंप्लीट पूरी एपिसोड बना गई है इस स्ट्रीम में. एंड होपफुली जितने साउंड इफेक्ट्स हैं सब कुछ ठीक ठाक है. एंड जिनको भी स्ट्रीम अच्छा लगा, प्लीज गाइज डू सब्सक्राइब एंड डू लाइक द वीडियो. सपोर्ट द चैनल गाइज. और जिनको भी कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल खेलना है भाई, तैयार हो जाओ. ठीक है, तैयार हो जाओ. तो गाइज मिलते हैं कल या परसों के एपिसोड पे. कल ही मिलते हैं. कल स्ट्रीम करेंगे तो फिर रात में इस एपिसोड को भी कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं. एंड उधर रेसिडेंट एविल का भी वीडियो अभी एडिट हो रहा है, तो उसको भी लाएंगे. तो होल्ड योर ब्रेथ गाइस, होल्ड योर ब्रेथ. और कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल मतलब कॉड तो चलेगा ही. कॉड का स्ट्रीमिंग स्टार्ट करना है, तो कोशिश करते हैं कल सुबह उठ गए. अगर मैजिकली समहाउ अगर उठ गए तो पक्का स्ट्रीम होने वाला है उसका. ठीक है, पक्का स्ट्रीम होगा. चलो गाइस, इसी के साथ लेते हैं अलविदा. अच्छी खासी लेट नाइट हो चुकी है. होपफुली सब लोगों को मजा आया होगा स्ट्रीम देखने में. चलो तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर. मिलते हैं कल के एपिसोड्स पे. बाय गाइस, टेक केयर.